Am I audible? Okay, thank you. Hello everyone, this is Professor Dr. Shukmar Gupta, CMD RFI. I feel honored to be invited to this international conference on impact of information technology after pandemic in the field of commerce, management, science, medical, engineering, education, and humanities. The aim of this international conference is to provide the most complete and reliable source of information on the recent advancements in the field. The conference covers a broad range of topics. I bring greetings and best wishes from the Research Foundation of India. Much has happened in the field of information in the past few years, and there is no doubt that the role of the Research Foundation of India has evolved and changed over the years. In the networked knowledge-based global economy of today, information is a crucial and strategic resource for economic growth and sustainable development. Now, it's my privilege and honor to welcome all the dignitaries, resource persons, and experts available for this international conference. By all accounts, it is very well done with a very good and diverse set of speakers and a high level array of participants. I am thankful to Dr. Saurabh Jain, Chairman RFI. Under your capable leadership, the reputation of the RFI is increasing day by day. I am also thankful to Dr. Ajay Jain and the entire team RFI and organizing institute for the excellent organized conference. I am thankful to all who have given their input in this international conference and all participants who made this event a success. It is indeed an excellent job by the team. May I take this opportunity to convey my very best wishes for an effective, successful, and productive conference. Thanks for your passion. Thank you again. Over to you. Thank you very much. As occasion of International Conference 2023, organized by Department of Computer Science, Mata Jijavibai, Government PG College, Indore, and in association with Research Foundation of India, is sponsored by WFST, World Virtual Conference Forum, Edu Academic, INC. As we know very well, this conference is based on impact of information technology after a pandemic in the field of multidisciplinary criteria. On the occasion of this conference, I would like to welcome today Chief Patron, Dr. Kiran Saluja ji, Dr. Shri Dwivedi Kadar ji, Principal Mata Jijaji Government PG College, Indore, Dr. Asuk Kumar Gupta ji, CMD, Research Foundation of India, Dr. Namita Sishodia ji, Convener, Dr. Paritosh Sharma ji, Organizing Secretary of the conference, all guests and interested guests from India and abroad. On this occasion of the international conference, we received near about 50 plus articles, and you can have a good look for in Slovenian. So actually, this conference is based on online mode and hybrid mode. So afterwards, the technical session will be start directly for online participant because of this conference will be run near about 10 to 4 p.m. So we will start technical sessions for the content of the international conference. So thank you very much. Over to you, Mr. Yotas, please. Thank you.
Yes, sir. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yeah, yes, sir. I'm sharing my screen. Yes, yes. Is it visible? Is it visible, sir? Yes. Very good morning to all the guests and the organizing committee. First of all, I thank you for this opportunity to present my paper. Uh, my topic is impact of COVID-19 on traditional retail business in Indo district. Talking about coronavirus, this is an infectious disease identified as coronavirus disease was brought by SARS coronavirus. Most virus infected people will suffer from mild to severe respiratory illness, but they will recover without any need of special treatment. However, some will get severe ailment and requirement medical attention. Age and the presence of underlying medical conditions like cancer, diabetes, cardiovascular disease, and chronic respiratory diseases increases the risk of developing this serious illness. Anyone could get unwell with this COVID-19 virus and die at any age. The best way to prevent and reduce transmission is to educate yourself and on the sickness, how the virus spreads. One could avoid this infectious disease by maintaining the distance of 1 meter and wearing proper mask and washing the hands with sanitizer, which is alcohol based. And with this COVID-19, there were almost 40 to 60% new cases reported every day, due to which the several state administration declared a total lockdown in the major cities. The shutters of all the stores, market, restaurants, lounges, gyms, everything was closed, due to which there were both the organized and unorganized retailers were experiencing the effect of COVID-19, and there was a loss of revenue in the malls and other businesses due to this COVID-19. The shutdown had a tremendous effect on the retail industry. By 2021, it had a sizable effect on a wide range of industries around the globe. But the retail led to the list of those impacted. Retail sales in India decreased by 79% in May 2021 as compared to 2019. The retail industry saw the largest decline in beauty, wellness, and personal care by 87%, and followed by footwear 86% as compared to other industries. The food and grocery sector experienced a better decline by 34%, and restaurants experienced 70% of decline, which shows that how the traditional retail sectors might have survived with this COVID-19 uh, process. There are various difficulties that the retail sectors have faced. The shop owners lost the substantial amount of money since they kept the shutters closed due to this lockdown. There are fewer people shopping in physical stores as a result of increase in internet shopping due to the consumer anxiety. Every merchant lacked a website or online store where consumer could find them and make purchases. And not every retailer has delivery personnel to assist consumer, which makes the selling procedure more chaotic during the lockdown. And the ability for customer to make yes, yes, sir. So my main objectives were to examine the impact of consumer behavior due to COVID-19 on traditional retail businesses and to analyze the challenges and the opportunities faced by traditional retailers. I used the descriptive research method, and I collected the data from both the primary and secondary sources, and I used the convenient judgment samplings. Here, this table shows the demographic profile of the data that I have collected, and the majority of data I have collected from the females respondents, and they were also the majority of education was the degree, and the majority of household income was from 10,000 to 15,000. And here, this table shows that how the impact of consumer behavior due to COVID-19 has impacted on traditional retail stores. Variety of products. Consumer behavior due to COVID-19 has changed. They prefer variety of goods at one place. Traditional retail stores do not store all kind of goods at one place during the lockdown.
and they kept only the essential goods at the places, due to which the people and the customer prefer to shop online where they could find varieties of products at one place. Digital payment. Not all the retail sectors provided any digital payment during the lockdown system, and people were very afraid about the corona, and they always preferred to pay, uh, be in at a safe place and purchase online there where they could pay a digital payment system. But nowadays, almost every retailers have adopted this digital payment system. Timings were also a great issue during the shutdown. There was a specific time for the stores to open their shop and close down, due to which also impacted on traditional retail stores. People also preferred to go for shopping at the places which have very less rush. Customers to browse at their own pace. Traditional retailers during the lockdown did not allow the customers to browse at their own pace, due to which the customers also preferred online shopping where they could browse various kinds of goods and products at one place and purchase according to their own convenience. And fearful about their health. Children, youngsters, old age people, everybody was very much fearful about their health during the lockdown. Buying groceries from kirana stores. There were almost 50% people who wanted to buy goods from the kirana shops, and other 50% always prefer to buy goods from the online platforms. Changing to less expensive product. Prices of the product during the corona rise to the sky, and prices of the essential goods were also double in the COVID time. Yes. Yes. My main conclusion is that the COVID-19 has infected the traditional retail sectors in various ways, and the traditional retail sectors do not gain more revenue during COVID-19 period, and due to which they face a lot of difficulties and problems. Nowadays, the traditional retail sectors have also adopted the digital payment system. They have also they are also giving the varieties of goods and products at one place, and they are also giving the after sales service to the servants. Yes, sir.
Yes. Yes, sir. Present, sir. Yes, sir. Just sharing the screen. Sure, sir. Sir, I'm just sharing 1 second. Okay. Sir, I think hope everybody can see the presentation. A very good afternoon to everyone. Today's our topic is the vistas of technological revolution shaping the future of school education post-pandemic and Indian perspective. The study conducted by James Thomas, Seymour Joseph, research scholars, APJ Abdul Kalam University, Indore. What was the purpose of the study? The purpose of this investigation is to analyze the effect of technology on education after the COVID-19 pandemic. This information helps the readers to understand the importance of technology in teaching learning process. So global education has been very adversely affected due to the COVID-19 pandemic. To stop this disease from spreading, schools had to close all through the world. Despite of the fact that online teaching approach was not practicable for many developing nations like India, many schools had to adopt in order to maintain the education system. They had to open online system. With the advent of online learning, the idea of the traditional classrooms has undergone a significant transformation. The technological revolution that originated much before pandemic and gained maximum momentum during its reign and continues unabated during even today. The current research focuses on the impact of this information technology is exerting in the educational arena post-pandemic in India. So what was our research question? So the researchers framed 3 questions to understand the impact of educational technology in the field of education. The first question was, how does technology change the teaching learning process? What are the aspects and impact of COVID-19 on education? What are the advantages and opportunities laid out by the technological revolution on education? What methodology the researchers used? The researchers used a survey method to collect the qualitative data. The researchers used the qualitative experimental research. The data is collected by structured questionnaire which was made in Google Forms and mailed to the sample selected. The data collected is analyzed by using the statistical methods. What were the findings and the conclusions? The online learning using various tools and applications, and the research shows that it can be a good tool for teachers to keep their students continuing their education even after COVID-19 by allowing them to connect and communicate online. We know that the attention span of students are very less, and the students still now they enjoy the different games like nearpod, what the time to climb and selecting the avatar. So they enjoy a lot in their classrooms. Demanding and challenging COVID-19 has been for students, instructors, and parents. There are many instances in which technology has improved students' academic performance. So additionally, it has been sparked in the students' drive, passion, and interest for knowledge. Even the inclusion of gamification, which made shows that a lot of interest in the students, and the students are motivated a lot in this due to the inclusion of the game elements in their teaching learning process. So so we can conclude that the ICT, the information technology, has a positive impact on the education. Thank you. Thank you, sir. Morning, sir, and morning, one and all everyone present here. Let me share my slides. Is my screen visible?
Once again, morning to another present here, and thank you for giving me this wonderful opportunity. I'm Varun Aditya, student of Congo Engineering College, third year, who is here to give a presentation on the topic, the beginning of revolution 21st century wholesome transformation of human intelligence. So let me introduce this topic with the domination of artificial intelligence and machine learning in the modern world after the time of 2020 COVID pandemic. So at the year of 2016 and 17 itself, we can see a drastic growth of AI in thing. So let us talk about the growth of artificial intelligence. So at 1950, there came a test that is called Turing test, which is found by Alan Turing. It gave it gave a difference between all humans and robotics, that is intelligence. So at the time of 1956, John McCarthy introduces that term, AI's Turing test term, as artificial intelligence. So here is the birth. And 1964, Joseph gave a conversation to humans. So where the robot was able to understand the conversation with human itself. And then at 1997, there came indoor sports. So the robots and the with the help of AI, started playing chess, and that robot has won a international chess champion Gary Kasparov. And then here comes 1999. After a period of time, here is the first company Sony launches a first robot, that is AIBO, which has a personality that to develop soft skill development at a particular period of time. And then, pardon, sir. Okay, fine, sir. Let me go to the next slide. So here is the flow chart. Here is the data, statistical data of the growth of artificial intelligence in the thing. And then the other topic is AI development and deployment. It is where the idea is been designed and then it is developed and deployed to the customers. So here are the deployment and that flow chart. And then automation and manufacturing side. So what are all the automation equipments we have to give a growth? That is sensors. We use sensors, and then we use advanced chips like Adreno, and then Raspberry, and then we use clouds for immense amount of storage and all. And then we have recognition, highly sensitive for recognition purpose and all, like to recognize what are all the things. So these are all the three questions which gave an immersion of the growth of AI. That is, which process rely on heavy on AI, and then what are all the organizations which uses AI, and what are all the benefits we gain through AI adoption. And then these are all the predicted growth. Yes, sir. After the job opportunities, let me conclude. In this pandemic has the accelerated adopted of digital technologies, leading to increased effectivity of productivity. However, it has been also a highlighted need of the responsibilities, use of technology, and the importance of digital liberty. And then this conference has empathized the importance of collaboration and cooperation among the various industries and sectors for fully harness potential and technology to drive economical growth and improvement quality of life for all. So thank you for giving me this wonderful opportunity. Good morning, all of you. Am I audible? Please confirm. Okay, sir. Sir, let me share my screen first. Screen is visible or not? Sir, screen. Okay. Good morning, all of you present here. Myself, Reena, PhD scholar, DECSA, MDU, Rohtak, and with my co-author, Ms. Preeti Sharma, ma'am, Assistant Professor, Ms. Amrinder Gill, ma'am, Assistant Professor from DCSA, MDU, Rohtak.
My topic for today's presentation is analysis of various machine learning algorithms for cyber threat detection. First of all, I would like to explain the outline of my presentation, which will start with the introduction to the cyber security, then followed by examples of the standing cyber threats, then the introduction to machine learning and the most popular machine learning techniques used for cyber security with the comparison. So move to the next slide. First, what is cybersecurity? Cybersecurity consists of technologies, processes, and controls designed to protect systems, networks, programs, devices, and data from cyber attacks. Lot of cyber attacks we can see in today's world trending like ransomware attack, which we can see we have seen last year in November 2022 on AIMS Delhi ransomware attacks, where a lot of system or the whole whole the server was blocked by the ransomware attacker. Next is what is cybersecurity? Cybersecurity process of protecting data, electronic system, and networks against cyber attacks. As a study, 82% of employers report that a total shortage of professionals with the skill needed to protect against the cyber threat. There are lots of cyber threats. I have planned some here. First one is malware, phishing, man-in-middle, distributed denial services, brute force, SQL injection, domain name system, ransomware, and so on. So machine learning is a approach by using the trained model. We can process the data and analyze the work. Machine learning, two types of machine learning: supervised machine learning and the unsupervised machine learning. With the use of supervised machine learning, where large set of labeled data is used, and missing later labeled data is used for anomaly detection and risk scoring. With the use of large set of labeled data, we can use for malware detection and spam detection. With the unsupervised learning, we can create the clustering and the dual learning, the dimensionally reduction for anomaly detection, data exploration, etc. Now, how the AI model works? First, we have to train the AI model with the available data we are going to use in our study. First one is being a file, which are genuine file or the real files which are going to train our model that the model has to work accordingly. And the second one is malicious executable files. Then we train our model accordingly and create a predictive model. Then in the second phase, we provide an unknown data set to confirm that our model is trained or not. Is it able to define the malicious or when file or not? If the model can identify the two, then we can say that we have trained a good model. Next is study of different machine learning algorithms, which I have studied in my study. Lots of methods for machine learning algorithm are there. That is decision tree, sport vector machine, heavy bias, artificial neural network, K-means clustering, convolutional neural networks, recurrent neural networks, the strict both. Okay. Lots of difference are there, and some advantages and disadvantages are there. Thank you so much.
सामने पानी का भी लफड़ा है, कल भी पानी कितना तेज आ गया।
ये वेबकैम भी काम नहीं कर रहा है। क्या करें? पता नहीं, अंदर से प्रॉब्लम। आवाज कम जा रही बाहर कमरे में बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अतिथि को स्वागत का अवसर है। हमारे अतिथि श्री सत्यनारायण संगम उपस्थित है। इनके स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर श्री द्विवेदी की हमारे मुख्य हमारे मुख्य श्रीमान गुरु सत्यनारायण सर, जिनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश में रहा है और इन्हें कई पुरस्कारों से सुशोभित किया गया है, जैसे मंच नाम साहित्य आदि। श्रीमान सत्यनारायण साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं और अपने आप में सशक्त हस्ताक्षर है। इन्हें कोई और नहीं जानता और किसी परिचय नहीं जानता और अगर नेता के रूप में बहुत ही विशेष अतिथि के स्वागत के लिए डॉक्टर उषा कृष्णन हमारे महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य रही है, साथ में संचालक और अनेक राजनेता के रूप में जाने माने
एकेडमिशियन है, शैक्षणिक जगत में एक जानकारी के रूप में उनका अलग ही अस्तित्व रहा है। इनके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर अनूप जग्गी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो हमारे प्राचार्य डॉक्टर उषा जी का स्वागत करें। मनोविज्ञान के क्षेत्र में और रिसर्च में, शोध कार्य में रिसर्च सुपरवाइजर, इनकी भूमिका बहुत ही, इनका योगदान विलक्षण है। विशेष अतिथि हमारे बीच में डॉक्टर अवधेश यादव, जन भागीदार अध्यक्ष हैं। ये पीएचडी की जो डिपार्टमेंट का केंद्र है, उसमें इन्होंने एक गुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में काफी सेवाएं दी है। सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और शिक्षा संस्कृति उत्थान विकास की परीक्षाओं के विकल्प के प्रांत संयोजक हैं। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर दिनेश दवे कि वे यहाँ हमारी डॉक्टर सलूजा भी हमारे बीच में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित होने वाली है और मैं स्वयं श्रीमती रीना वर्मा जी का स्वागत करना चाहूंगा सदन की अनुमति से। श्रीमती रीना वर्मा का इस महाविद्यालय से काफी जुड़ाव रहा है और कई समितियों में, कॉलेज में जो डेवलपमेंट की भूमिका रही है, जन भागीदारी समिति में और अन्य और सर डॉक्टर एस वर्मा उनकी धर्मपत्नी है, वो हमारे महाविद्यालय में वर्षों प्राध्यापक रहे, बड़े सक्रिय रहे और बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। हमारे बीच में डॉक्टर अजय जैन उपस्थित हैं जो RFI के कोऑर्डिनेटर हैं। उनके स्वागत के लिए मैं श्री अमित कनौजिया को आमंत्रित करता हूँ कि वो आपका उनका स्वागत करें। आइए अजय जैन साहब। ये बड़े गौरव का विषय है कि हमारे आज के दिन ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है कंप्यूटर साइंस पे, जिसका जो थीम है वो है इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आफ्टर पेंडेमिक इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, मैनेजमेंट, साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज। लगभग सभी स्कूलिंग सिस्टम शामिल है और ये ज्वाइंटली संयुक्त तत्वाधान में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है माता जीजाबाई गवर्नमेंट पीजी गर्ल्स कॉलेज इंदौर महाविद्यालय द्वारा और साथ ही रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड RFI-CARE, इसके कोऑर्डिनेटर हमारे बीच में मिस्टर अजय जैन हैं। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में सबसे पहले मैं रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में दो शब्द बताना चाहूंगा। हम हमारे महाविद्यालय से तो बखूबी परिचित हैं, लेकिन जिनके साथ हमने MOU साइन किया हुआ है वो है रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया। Research Foundation of India is strictly working for the social upliftment in higher education quality and Indian research promotions in the form of events like international, national conferences, seminars, workshops, symposium, and other activities. RFI works for the integration of intellectual ideas across the globe to fulfill the thirst of innovation of humanity. Research Foundation of India is concerned with improving the educational process by encouraging scholarly inquiry related to education and practical application of research results. Research Foundation of India is working for research and development for higher education. It has signed MOU with the top universities from India. RFI members are faculty, researchers, graduate students, and other distinguished professionals with rich and diverse expertise in education research. RFI does not take any financial responsibility from any government body.
RFI has organized more than 1,000 international conferences and workshops, faculty development programs, symposia all over the world. Now, RFI is having 87 chapters in India and 18 chapters in Asia and other countries, and categorized in 5 board: West, East, North, and Central Zone. इस कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हुए कि हमारी इस कॉन्फ्रेंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या हम इसके तहत इसको आयोजित करके हमारे उद्देश्य क्या रहेंगे। पहला तो टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड नेशनल बिल्डिंग, टू आइडेंटिफाई द एक्सटेंट टू व्हिच मीडिया इंजीनियर्स and distorts our perception on sustainable development, to find out the impact of social science, management, technical advancement on the minds of general masses at grassroots level. अगला ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ द पॉपुलेशन पैराडाइम with sustainable ecological environment implications on various issues for global development. Also to draw a guideline of sustainable development based on academic deliberations in science, global business, management and engineering technologies. तो इस सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आज हमारे बीच में बहुत से जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ वो जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, और ये टेक्निकल सेशन एक सुबह का हमारा चल भी रहा था, जिसमें डॉक्टर रुद्र पीडी हिमरे हैं जो चेयरपर्सन है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी नेपाल के, वो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमारे बीच में। यूएसए फ्लोरिडा से है प्रोफेसर डॉक्टर बीट्रिस लूसिया साल्वेडार रिजोटो, इज ए प्रोफेसर वेनी क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा यूएसए, ये सभी ऑनलाइन उपस्थित हैं। और एक है डॉक्टर एस.सी. ड्रैगन जोवानो स्पोपी, एकेडमिशियन है, एजुकेटर है, स्पीकर है, लेक्चरर है, साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, ऑथर भी है, और साथ में बहुत सारे भूमिकाओं में इन्होंने अपना योगदान दिया है। ये मैसिडोनिया से है। इसके अलावा ले की माई ऑन है जो इंटरनेशनल एम्बेसडर है ऑफ नमस्ते इंडिया मैगजीन, वॉइस ओवर ऑफ आर्केडी और मोटिवेशनल चैनल वियतनाम, ये सभी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और इनको हम एक एक दो मिनट सुनने का मौका मिलेगा इस इनॉग्रेशन के कार्यक्रम के अंतर्गत ही। और कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में यह हमारे अतिथियों का को सम्मान देने का अवसर है, तो हम मुख्य अतिथि श्री सत्यनारायण जी सत्तन का हम सम्मान करना चाहेंगे, जिसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारी प्राचार्य डॉक्टर श्री द्विवेदी मैडम को। साथ ही सम्मान के लिए परितोष शर्मा जो हमारी सहायक प्राध्यापक हमारे कंप्यूटर साइंस के फैकल्टी हैं, बड़े सक्रिय हमारे फैकल्टी मेंबर हैं परितोष शर्मा, और इस महाविद्यालय परिवार के हमारे मुख्य लेखक पोप सिंह नागर, कृपया आप मंच पर पधारें और हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करें मोमेंटो देकर। मोमेंटो और शॉल और श्रीफल से हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर अजय द्विवेदी से निवेदन कि आप मंच पर पधारें। इसके बाद अवसर है सम्मान का हमारे विशेष अतिथि इस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर उषा कृष्णन मैडम, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर हमारे अमित जैन, अमित कनौजिया, इस महाविद्यालय के वो कंप्यूटर साइंस के फैकल्टी मेंबर हैं, बड़े सक्रिय हैं, और हमारे महाविद्यालय परिवार के, और साथ ही हमारे तृतीय कर्मचारी जो यूनियन है उसके प्रांतीय सचिव हैं जितेंद्र तोमर।
आपका स्वागत कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस फैकल्टी के अमित धनोजिया सर और कर्मचारी यूनियन के प्रांतीय सेक्रेटरी श्री जितेंद्र तोमर। अब हमारे अतिथि डॉक्टर अजय जी जो हमारे इस कार्यक्रम के सहभागी भी हैं साथ में, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर मंजू शर्मा मैडम को। डॉक्टर सौरभ मुक्तिबोध सर, आप यहाँ पर निवेदन है कि आप हमारे डॉक्टर अजय जैन सर का स्वागत करें। हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर श्री द्विवेदी मैडम के स्वागत और सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूँ डॉक्टर मंजू शर्मा मैडम को कि वो आकर हमारे प्राचार्य महोदय का स्वागत करें और सम्मान करें। हमारे इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि डॉक्टर अवधेश यादव जन भागीदारी अध्यक्ष, उनके सम्मान के लिए मैं हमारे परम आदरणीय सर प्रोफेसर संजय पंडित सर को मैं आमंत्रित करता हूँ और दिनेश दवे जी को कि वो आकर हमारे जन भागीदारी अध्यक्ष का स्वागत सम्मान करें। हमारे बीच में हमारे अतिथि विशेष अतिथि श्रीमती वीणा वर्मा मैडम उपस्थित हैं। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी वरिष्ठ प्राध्यापक वंदना अग्निहोत्री जी मैडम। आप मैडम का स्वागत और सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय आ गया है हमारे अतिथियों को सुनने का, उनसे आशीर्वचन लेने का, उनसे उनके उद्बोधन को सुनने का, ताकि हम उनसे लाभान्वित हो सके। हमारे बीच में बड़े गौरव का विषय है कि हमारे बीच में राष्ट्रीय कवि श्रीमान श्री सत्यनारायण जी सत्यन उपस्थित हैं और हम सभी उनको सुनना चाहेंगे। तो उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे मुख्य अतिथि श्री सत्यन जी। ये हमें आशीर्वचन है।
और इस सदन को संबोधित करें। इसके पूर्व मैं वीणा वर्मा मैडम को निवेदन करता हूँ कि वो कुछ कहना चाहती हैं। आदरणीय मंच पे विराजमान हम सभी के लोकप्रिय गुरु आदरणीय सत्तन जी, आपको प्रणाम करती हूँ। अवधेश यादव जी, हमारी उषा कृष्णन मैडम, श्री द्विवेदी मैडम, अजय सर और इस प्रांगण में उपस्थित सभी समर्पित गुरुजन, बाहर से आए हुए प्रतिभागी और प्यारी बेटियां। वैसे तो आज यहाँ पर हमारे लोकप्रिय सांसद श्री शंकर ललवानी जी को उपस्थित होना था, लेकिन क्योंकि कल से बजट सत्र प्रारंभ होने वाला है, इस वजह से आज उन्हें दिल्ली जाना था। तो उनकी तरफ से उनका एक संदेश मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। उन्होंने इस कंप्यूटर विभाग को और माता जीजाबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि ऐसे कार्यक्रम जो बच्चों के भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए आयोजित किए जाएं, उसमें सदा उनका साथ रहेगा। इसी विशेष भावना के साथ उनकी तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपके। हमारे बीच में उपस्थित है पीतमपुर कॉलेज महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विवेक खत्री सर, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। हमारे मित्र भी हैं वो, तो मैं निवेदन करूंगा परितोष शर्मा सर से कि वो आए, या अमित कनौजिया सर, आप स्वागत करें। मैं अब निवेदन करता हूँ मुख्य अतिथि महोदय से कि वो आकर हमें आशीर्वाद दें। ठीक है, हो गया। ये किसी के साइज का नहीं होता। हाँ, इसको साइज का करना पड़ता है। ये विज्ञान में सम्मानीय मंच प्राध्यापक उपस्थित देवियों और सज्जनों, ज्ञान और विज्ञान का द्वंद्व है कंप्यूटर, और ज्ञान और विज्ञान के द्वंद्व में हमें इस बात को समझना है कि स्थायी कौन है और अस्थायी कौन है। ज्ञान और विज्ञान भक्ति के पुत्र हैं। भक्ति के पुत्र ज्ञान और विज्ञान होने के कारण ज्ञान तो स्थायी है, लेकिन विज्ञान अस्थायी हो गया, क्योंकि उसमें एक विशिष्ट रूप से एक प्रत्यय लगा हुआ विज्ञान, और जो प्रत्यय लगा हुआ है उस प्रत्यय के परिणाम स्वरूप विज्ञान जो है अपने आप की गति को कुछ ही दिनों में परिवर्तित कर लेता है। ज्ञान स्थायी रहता है। ज्ञान बढ़ाए या विज्ञान बढ़ाए, आप ज्ञान की साधना में रहते, विज्ञान के उपकरणों का उपयोग करते हुए अपने जीवन की क्रमिका को चलाने का उद्योग कर रहे हैं, और इस उद्योग के माध्यम से आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आकाश की यात्रा करना चाहता हूँ, आकाश पर चंद्रमा पर अपना
बस्ती बसाना चाहता हूँ। और ये सारी की सारी स्थितियों को आप ज्ञात करने के लिए चले, उस अज्ञात को ज्ञात करने में अगर आपके पास ज्ञान की पूंजी नहीं होती तो आप विज्ञान तक पहुंच पाने में सर्वदा असफल रहते। और वो सर्वदा असफलता का परिणाम जो है वो हमें आज भी देखने को मिल रहा है। हम नए उपकरणों का निर्माण करते हैं, कुछ दिनों में वो पुराने हो जाते हैं। इस मोबाइल को ही लेकर के देख लीजिए आप, इसके कितने स्वरूप आए, कितने डब्बे में चले गए और कितनों का उसका परिवर्तन हुआ। विज्ञान प्रतिपल परिवर्तित हो जाता है और हमारा ज्ञान अपने स्थान पर स्थायी होकर के हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप इस संसार की उन महान विभूतियों को समर्पित होने वाली उस नाम पर इस कॉलेज को, इस महाविद्यालय को चलाने वाले, संस्कृति और संस्कार को लेकर के चलने वाले मानवाकांत भारत वर्ष में जो अपने संस्कृति और संस्कार को लेकर के चलता है। विज्ञान के बारे में हमने पढ़ा कि वो राम के जमाने में पुष्पक था जो वो लेकर के आए थे। उसमें वो इतना बड़ा विज्ञान था कि उसमें चाहे जितनी सवारियां बिठा दो उस विमान में एक सीट वेकेंट रहती थी और उस पर अगर तुमने दूसरे आदमी को बिठा दिया, एक और बिठा दिया तो फिर एक सीट वेकेंट हो जाती थी। वो अपनी आकार को ग्रहण करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता था। जितनी उपस्थिति उस तक पहुंचने के विज्ञान की कसर को आज तक हिंदुस्तान में पूरी करने का उद्योग हो रहा है। हिंदुस्तान में विश्व में ही हो रहा है और इस विश्व में हो रहा है तो इसमें हमारी अगर कोई सहायता करता है ज्ञान की यात्रा में तो वो कंप्यूटर साइंस। वैसे इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मनुष्य का मन भी कंप्यूटर, उसके पास स्थायी रूप से पूंजी जमा होती है और जो स्थायी रूप से पूंजी जमा होती है वो किसी कंप्यूटर के पास नहीं होती, उसके पास जमा की हुई पूंजी होती है और उसके पास जो जमा की हुई पूंजी होती है वो मनुष्याकृत होती है और जो मनुष्याकृत होती है वो पौरुष को पुरुषार्थ ज्ञान से प्रदान होता है और जब ज्ञान से प्रदान होता है तो भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य का जन्म होता है जो हमें एक मार्ग की ओर ले जाते हैं, वो निर्वाण की ओर ले जाते हैं और निर्वाण से लगा करके निर्वाण की ओर भी ले जाते हैं। हमारे बीच में शब्द ही ब्रह्म स्वरूप बनकर के चेतना को स्वेता देता है। हमारा आपके बीच में संगोष्ठी के लिए आपने हमें बुलाया है, हम यहाँ पर आपसे मुखातिब हो रहे हैं। हमारे यहाँ परंपरा है कि हम किसी अतिथि को बुलाएं और उससे कहें कि वो अतिथि जब अपना भाषण करे, भाषण करके जब विदा होने की स्थिति में आए तो वो अतिथि कहता है कि मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। बात का आभारी है कि तेरे पाँव भारी है, कि तेरा हृदय भारी है, कि तेरी बुद्धि भारी है। प्रेम, प्यार, स्नेह और दुलार की रज्जू से बंधा हुआ प्राणी जब किसी समारोह में किसी स्थान पर पहुंचता है तो वहां पर औपचारिकताएं समाप्त हो जाती है। जहां पर ज्ञान स्थायी होता है वहां पर इस विज्ञान के प्रजनन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक इसी तरीके से कि एक मुसाफिर आता है और दूसरा अपना चला जाता है। समय समय की जाने वाली जो वो आपकी हम उसी युग में जी रहे हैं। आप विज्ञान को लेकर के बात कर, हम उसी युग में जी रहे हैं जब आदमी को आत्मदायित्व पड़ी हुई है। अपने पेट से ऊपर सोने की शक्ति से अपने बेटे बेटियों को उनके भविष्य की ओर ठीक करने का उद्योग इस देश में शुरू हो गया है। इस देश के मान स्वरूप को इस्लाम और आज भी चेतना हमारी बेटियों ने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया है क्योंकि कुदरत का करिश्मा नहीं, कुदरत है बेटियां। कुदरत का
करिश्मा नहीं, कुदरत है बेटियां, ये दुनिया बनाए रखती, वो अमृत है बेटियां। कुदरत का करिश्मा नहीं, कुदरत है बेटियां, और ये दुनिया बनाए रखती, वो अमृत है बेटियां। दुख दर्द के कांटों में भी गुलाब बन खिली। क्या है बेटियां? दुख दर्द के कांटों में भी गुलाब बन खिली। अमृत कलश है, अमृत कलश है, पुण्य मुहूर्त है बेटियां। अमृत कलश है, पुण्य मुहूर्त है बेटियां। यही कारण है कि हम अपनी मातृभूमि को समर्पित करते हैं। हमने नारी को सम्मान दिया है, शब्द से भी सम्मान दिया है, वैज्ञानिकता से भी सम्मान दिया है। हमारी शक्ति का ये विज्ञान है कि हमारे बीच दो शब्द है, एक शब्द है नर, दूसरा है नारी। नर शब्द में कोई मात्रा नहीं है। नर शब्द में विज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है? जब नर शब्द में कोई मात्रा नहीं है, बिल्कुल दिगंबर है। नारी शब्द में दो मात्राएं, दोनों बड़ी मात्राएं। ना के ऊपर आ का डंडा लगा हुआ है जो नारी के मान सम्मान और स्वाभिमान का परिचायक है, और र के ऊपर पली हुई नीट की मात्रा जो है नारी की मर्यादा का परिचायक है। ये इस देश में भारत माता के गौरव को चित्रित करने का अध्याय है। इसीलिए जीजाबाई का महत्व लेकर के ये महाविद्यालय चलाया जाता है, जाता है। इसके अंतर्मंडल ज्योति जगाने के लिए, राष्ट्र प्रेम की भूमिका जगाने के लिए, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना जगाने के लिए, और उत्कृष्ट जाकर प्राप्त वरांग बोधक की भावना को जगाने के लिए, विवेकानंद के स्वरूप को सार्थक करने के लिए हमारी बेटियों ने जो जो अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन किया है, वो ज्ञान से, विज्ञान से, सेना से, समाज से, राजनीति से, ऐसा कोई सा भी क्षेत्र बाकी नहीं छोड़ा है जिसमें हमारी बेटियों ने खड़े होकर के अपने आप का परिचय दिया है। ये निरंतर प्रवाहमान होने वाली जो कथाएं, ये निरंतर प्रवाहमान होने वाली जो जीवन की गतिमयता है, जीवन की इस गतिमयता को जिंदादिली के साथ आगे बढ़ते हुए चले रहना, कि जब तक भुवन भास्कर जग में नया सवेरा लाएंगे। एक उद्घोष करना, एक भावना जागृत करना कि जब तक भुवन भास्कर जग में नया सवेरा लाएंगे, जब तक कला निधान चंद्रमा अपनी कला दिखाएंगे, जब तक धूम तुम्हारे बादल नभ मंडल में छाएंगे, तब तक है भारत माता तेरा गौरव। तब तक इस संकल्प को लेकर के दोहराते हुए आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणप्रद हो। ज्ञान से विज्ञान तक की भावना को, अपने ज्ञान को स्थिर रख करके ही किया जाना उचित होगा। इसी भावना के साथ आपके हृदय में विराजमान माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम हमारे मुख्य अतिथि महोदय का हृदय से आभारी है कि उन्होंने इतने अच्छे उद्बोधन और आशीर्वचन और हमारे पार्टिसिपेंट्स को एक संदेश दिया। और हम देखते हैं कि आज का युग, दिस इज एन एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर साइंस इज इन अ वेरी एडवांस स्टेज, जहाँ हमारे पास मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जिस पे आज ये सेमिनार आयोजित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय पाइथन, और न जाने किस किस युग में जा चुका है कंप्यूटर साइंस और हमारे विज्ञान। उसमें हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने वही ज्ञान और विज्ञान, और साथ में उन्होंने अपने कविता के माध्यम से भी अपना संदेश व्यक्त किया, बेटियों के महत्व को बताया, और साथ में ये कहा कि इतने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जाने के बाद भी जो प्रेम, करुणा, सहानुभूति और इनकी जो है मनुष्यता की, इनका महत्व अपनी जगह कम नहीं किया जा सकता। इनकी मानव होने के लिए बहुत आवश्यकता है कि मनुष्य होने के लिए हम कितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में पहुंच जाएं, लेकिन मानवीय भावनाएं और संवेदनाएं अपना जो मनुष्य रूप प्रदान करती है, वो अपनी जगह
इसके बाद हमें अवसर है हमारा विशेष अतिथि को सुनने का, जो हमारे महाविद्यालय परिवार की ही है, डॉक्टर उषा कृष्णन मैडम, और हमारे साथ वर्षों इस महाविद्यालय में रही हैं। हमें भी बड़े सौभाग्य रहा कि हमने उनके साथ न्यू जीडीसी में हमने उनके साथ कार्य किया, उनके निर्देशन में काम किया, प्राध्यापक साथी के रूप में, वरिष्ठ साथी के रूप में उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, साथ में वो प्राचार्य के रूप में इस महाविद्यालय में रही, और उनसे हमें सतत जो है ज्ञान प्राप्त होता रहा। लेकिन उनके प्राचार्य की जो भूमिका रही वो बिल्कुल ही विलक्षण रही, अलग एक किस्म की रही। तो मैं एक बार पुनः उनसे उनको सुनने का अवसर मिल रहा है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी विशेष अतिथि डॉक्टर उषा कृष्णन मैडम जी को कि आप आए और हमें कुछ करते करें। आदरणीय मंच, मुख्य अतिथि सत्तन जी, विशेष अतिथियों में मीना वर्मा जी, अरविंद जी, मैं आपका संजय जी, अवधेश जी और जैन साहब और सुदेवा साहब तो हमारे पुराने मित्र हैं, और जो भूतपूर्व से भी अभूतपूर्व ज्यादा शक्त हुई है वो आपकी प्राचार्य श्री द्विवेदी है। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस पूरे अवसर में, इस अकेजन में मुझे सम्मिलित होने का मौका दिया गया। और माननीय सत्तन जी को सुनने के बाद मेरा बड़ा डर दिख रहा है। मुझे पूरा जो वक्तव्य है उसमें मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ये क्षमता है कि मैं इतना जोश प्रस्तुत कर सकूं। पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा एरिया है वो अब हमारे लिए एक बहुत विचारणीय प्रश्न बन गया है। बहुत आगे बढ़ गए हम लोग, पर कभी कभी मैं यूक्रेन के युद्ध के देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कभी कभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी होती तो शायद हम लोग ज्यादा जिंदा रहते। क्योंकि मैं मनोविज्ञान की हूँ, मैडम भी समाजशास्त्र की हैं। बस एक ही निवेदन है कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो हर क्षेत्र में अंदर आ चुका है उसका एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो एंगल है वो हम लोग न भूलें। किसी भी प्रकार की जो हमारी मशीनरी आ चुकी है या पूरा कंप्यूटर या पूरा ये मोबाइल, मैं अभी यही देख रही थी कि जितनी छात्राएं यहाँ आ रही थी सबके हाथ में था मोबाइल। आज हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गए हैं। इन्हें आप कल्पना आप भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते कि यदि हमारे पास ये मोबाइल नहीं होता तो हमारा एक दिन का भी काम कैसे चले। और सिर्फ मोबाइल नहीं है, आप जिस तरह के माध्यम से पढ़ाई कर रही हैं, अब ये पूरा पैंडेमिक के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ था। पूरा ऑनलाइन मेडिकल वाला जो हम लोग को पूरा कंसल्टेशन मिला, कभी कल्पना कीजिए कि ये नहीं होता तो शायद हमको डॉक्टर से संपर्क करने का ही अवसर नहीं मिलता। आप सब शिक्षक हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप लोगों की इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर किस प्रकार की स्थितियां मतलब संभाली गई थी। और इस पूरे ऑनलाइन में हम आपस में आमने सामने की बातचीत और आमने सामने का संबंध न भूल जाए, ये एक जिम्मेदारी आ गई। तो बस एक ही निवेदन है, इंफॉर्मेशन की ये टेक्नोलॉजी हमारा सामाजिक जीवन किसी भी प्रकार से इतना अधिक परिवर्तित न कर दे कि हम सामने बैठे व्यक्ति से बात न करके मोबाइल में बात करें। वो एक ऐड मुझे याद आ रहा है, वो माँ जो है वो ब्रेकफास्ट देती है अपने बेटे को और वो मोबाइल पे देख के बोलता है, माँ आप तो मेरे को फोन कर रही है। तो वो पूछती है, अच्छा तो फिर मैं और क्या करूँ। तो ये स्थिति आ गई है कि सामने बैठा हुआ हमसे बात नहीं कर रहा है, वो मोबाइल से हमें या और अन्य लोगों को भी संपर्क करने की कोशिश करे। ये दयनीय स्थिति हमें थोड़ी प्रिवेंट करनी है, थोड़ी आगे। तो बस इसी आग्रह के साथ और एक विशेष रूप
से धन्यवाद के साथ कि मुझे इस प्रकार का एक अवसर दिया गया, मुझे बुलाया गया। ये मेरा ही महाविद्यालय, मैं मानती हूँ, हालांकि है नहीं, पर मैं मानती हूँ, और जब भी आती हूँ तो सब याद आता है। आप सब याद आ जाते हैं क्या क्या किया और क्या क्या हम नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से आप लोगों को मेरा आशीर्वाद रहेगा, इस महाविद्यालय से मेरा हमेशा जुड़ाव रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही सारगर्भित और अच्छी चीजों की तरफ इंगित किया। विज्ञान का युग है, और मैडम ने हमारे बीच आज महत्व भी बताया, अच्छी बातें भी बताई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर साइंस की, और साथ में उससे क्या क्या उसकी जो है साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में भी बताया। ये बात सही है कि आज इसके अच्छे परिणाम भी काफी हैं इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, आर्टिफिशियल की मेडिकल साइंस में देख लें, लैंग्वेज और लिटरेचर में भी बहुत कमाल कर रही है आजकल एआई। लेकिन साथ में मैडम ने इस बात पर भी बल दिया कि हम सामने एक वर्चुअल वर्ल्ड में जो हम ज्यादा समय बिताते हैं, अपने मोबाइल से चैट करते हुए हम ये ना भूल जाए कि सामने बैठे हुए व्यक्ति से भी हमें बात करनी है। चैट जीपीटी का युग है ये, और इस तरह से हमें चाहिए कि हम अपने मानवीय मूल्यों को और अपनी जो सामाजिकता को भी बनाए रखें। और अब हमें अवसर है सुनने का हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर अवधेश यादव जी को, जो हमारे महाविद्यालय परिवार के ही अभिन्न अंग हैं, जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष हैं, और हम चाहेंगे कि हम सभी उनकी वाणी से लाभान्वित। सर। मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय कविवर श्री सत्यनारायण सत्तन जी, आपके पास इतने सारे सम्मान, उन्हें गिनाना मुश्किल है। सबसे बड़ा सम्मान आप शिक्षक रहे हैं हमारी बिरादरी के। बड़ा गर्व अनुभव होता है एक शिक्षक बाद में कवि के रूप में पूरे राष्ट्र की आवाज बनकर उभरा, इंदौर का नाम रोशन किया। ऐसे सत्तन जी हमारे बीच में है इंदौर में। हम अक्सर कार्यक्रमों के निमंत्रण के लिए गुरुवार के पास जाते हैं, 5 मिनट का टाइम लेते हैं और बैठना हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि इतनी अच्छे अच्छे प्रसंग, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपके मस्तिष्क में है, वो सब सुनने के लिए हमको बैठना पड़ता है, उठने की इच्छा नहीं होती है सर के पास। आपको ध्यान होगा राजवाड़े पर जब सर का कवि सम्मेलन चलता था तो हम सुनने जाते थे। एक तेज तर्रार पेने व्यंग बाणों से सजी आवाज, मधुर मिश्री से धुली हुई आवाज, प्रखर वक्ता के तौर पर दिलों में राज करने वाले हमारे सत्तन जी, जिन पर हमें बहुत नाज है। हमारे महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य सम्मानी कशन मैडम, स्वर्णिम काल के लिए उनका प्राचार्य काल जाना जाता है। हमारी वीणा वर्मा दीदी, जो कि सांसद प्रतिनिधि है अपने महाविद्यालय में। RFI के हमारे मित्र भाई अजय जी, यहाँ उपस्थित महाविद्यालय की सक्रिय, सहज, सरल, सबका ध्यान रखने वाली प्राचार्य मैडम, द्विवेदी मैडम, समस्त प्राध्यापक वृंद और बहुत ही प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। कल ही अंडर 19 में बेटियों ने नाम रोशन किया देश का, आप सबको बधाई। वर्ल्ड कप जिता दिया आप लोगों ने। अभी आपके महाविद्यालय का निरीक्षण करना है और खेल की क्या क्या जरूरतें हैं पूरी करना है, उसका हम बहुत जल्दी इंतजाम करेंगे, आपको अच्छा अवसर मिले
जितना पढ़ाई के क्षेत्र में अवसर है, खेलों में उससे भी ज्यादा अवसर हो गए। एलन मस्क की जितनी कीमत है, जितनी प्रॉपर्टी है, हमारे आईपीएल के खिलाड़ियों की बोली उससे ज्यादा लग जाती। विराट कोहली 1 महीने में उनसे ज्यादा कमा लेते। तो खेलों का भी उतना ही महत्व है, इसको भी आप नेग्लेक्ट मत करिए। दूसरा, आज का जो कॉन्फ्रेंस है अपनी, कि कोरोना काल के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, अन्य सामाजिक, पर्यावरण, इन सब बातों पे क्या असर पड़ा है इन क्षेत्रों पे। तो पहली लहर आई कोरोना की, चली गई, ज्यादा नुकसान नहीं करा, पर हमें उससे सीखना क्या क्या था, कितनी तैयारी कर लेना चाहिए थी कि आगे जो दूसरी लहर आती तो हम ज्यादा नुकसान में नहीं जाते। हमारे साइंस का, विज्ञान का क्या उचित प्रयोग कर लेते हैं। ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, उसके कारण ही कई लोगों के प्राण पखेरु उड़ गए। तैयारी नहीं की, दूरदृष्टि का अभाव था। कहाँ गया विज्ञान, कहाँ गया ज्ञान। दूसरी लहर आई और घर घर तबाही मचाकर चली गई। शमशान घाटों में जगह नहीं थी, कोई परिवार का व्यक्ति नहीं था अंतिम संस्कार, हॉस्पिटल में जगह नहीं, पेशेंट परेशान, दवाइयां नहीं, डॉक्टर को ही नहीं मालूम कौन सी दवाई लेना। जो दवाइयां दे दी उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी दिख रहे हैं। हार्ट खराब हो गया, किडनी बोल गई, खून गाढ़ा हो गया, 50 तरीके वो आ गए। तो ये विज्ञान का काम है कि एक लहर आ गई तो दूसरी में तबाही कम मचे। विज्ञान के होते हुए दूसरी लहर ने इतनी तबाही मचा दी, तो विज्ञान चैलेंज के तौर पर देखता है या नहीं देखता है, यह हमें सोचने को मजबूर करता है। अब चीन में लहर चल रही है, हमारे यहाँ भी चल रही है, क्योंकि दूसरी लहर के बाद जागरूक हुए, ऑक्सीजन के प्लांट डाल दिए बहुत सारे। विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, अपने हम क्या कर सकते हैं इस काल में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए? एक पौधा कम से कम अपने बर्थडे पे, अपने जन्म दिवस पे जरूर लगाएं। बात प्रैक्टिकल होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। तो अपेक्षा नहीं, अपेक्षा दुखों का कारण होती है। हमने कितने पेड़ पौधे लगा दिए अभी तक, क्या ऐसा पौधा लगाया था जिसमें फल आने लग गए? कितने पक्षियों को फायदा होने लगा, कितने यात्रियों को छांव मिलने लग गई, और जो ऑक्सीजन से कष्ट हो रहा था उतनी ऑक्सीजन आपने वातावरण में दे दी। कृपा करके अपने बर्थडे पे दोस्तों को यही गिफ्ट दीजिए, पौधा दीजिए, और आप हर वर्ष एक पौधा लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ने बहुत अच्छी बात कही कि पर्यावरण के महत्व को भी बताया, जो आज इस कॉन्फ्रेंस की भी थीम है। और हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमती वीणा वर्मा मैडम, उनसे सभी लोग परिचित हैं। इस महाविद्यालय से काफी जुड़ाव रहा है उनका। सांसद प्रतिनिधि होने के साथ साथ शहर में वो इस महाविद्यालय के जन भागीदारी समिति और इसके विकास में उनकी सतत भूमिका वर्षों से रही है। काफी वो चिंतित भी रहती हैं कि ये महाविद्यालय में अच्छे कार्य हो और ये महाविद्यालय दिन प्रतिदिन तरक्की करे। और आज उनका मार्गदर्शन हमेशा इस महाविद्यालय को मिलता आया है सतत रूप से। मैं मैडम से निवेदन करूंगा कि आज हमें सुअवसर मिला है कि आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं और हम आपको सुनना चाहेंगे, और छात्राएं भी और पार्टिसिपेंट भी और ऑनलाइन भी बहुत सारे हमारे प्रतिभागीगण जुड़े हुए हैं, तो एक उनको सुनने का अवसर है। मैडम। आदरणीय मंच, सभागार में उपस्थित शिक्षकगण और बाहर से आए हुए प्रतिभा
और बालिकाएं। मुझे कि मैं का हिस्सा बनी हूँ। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक राजा जो है वो अपने सैर को निकला शाम को। उसने देखा कि एक बहुत पेड़ लगा रहा है। बात मैं अपनी शुरू कर रही हूँ। अवधेश जी ने जो एक बहुत ही अच्छी बात कही उससे कनेक्टेड है मेरी बात। तो राजा को बहुत हंसी आई। उसने कहा कि मेरे बुजुर्ग, मुझे आपके कार्य को देखकर बहुत हंसी आ रही है। आप ये क्या कर रहे हैं? आपके पैर तो कब्र पे लटके हुए हैं। बुजुर्ग ने कहा, ये मैं अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं कितने साल जिंदा रहूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, लेकिन जब कल को मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आएंगे तो वो पूछेंगे कि मेरे लिए, हमारे लिए हमारे दादाजी क्या छोड़कर गए। तब लोग उन्हें बताएंगे ये जो पौधे लगे हुए हैं, जो आज ये फल दे रहे हैं, ये हमारे दादाजी लगा कर गए थे, जिसका लाभ हम ले। मेरी बात आप समझ चुके होंगे, मेरा उद्देश्य आप समझ चुके होंगे। इंदौर 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 आया। अब हमें पर्यावरण की तरफ एक कदम और बढ़ाना होगा। इसके साथ ही सभी लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं, तो क्या हम नियमों का पालन सही कर पा रहे हैं? क्या इंदौर यातायात में नंबर 1 नहीं बन सकता? हम लोगों को चाहिए कि हम यातायात के नियमों का पालन करें। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि एक सड़क पे 3 लाइन होती है, लेफ्ट, राइट और स्ट्रेट। जिसको राइट जाना है वो कहाँ खड़ा होता है? लेफ्ट में। कार जा रही है, 2 व्हीलर जा रहा है, उसको आगे से कट मार के वो अपनी मंजिल की तरफ जाता है। तो ये वाली शुरुआत जो है, हम छात्राओं से अपेक्षा करते हैं कि वो कम से कम इसकी शुरुआत करें। और जैसे कि हमारे महापौर ने ट्रैफिक गार्ड्स बनाए हैं, तो यदि वो चाहे तो वो भी इसमें अपनी भागीदारी कर सकते हैं। अब रही तीसरी बात, मुझे 3 बात कहनी थी, मैंने सोच कर आई थी मैं कि ये बात सिर्फ मैं छात्राओं के लिए कहूंगी। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका दुरुपयोग ना करें। कॉलेज प्रेमाइसिस में प्राचार्य मैडम और अन्य शिक्षकों को सहयोग करें। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, छात्राओं के लिए भी रहती है। आप कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये जो बात है, ये वाली पूरी जानकारी प्राचार्य मैडम 24 घंटे आप पर नजर रखती है। आप पहले हैं, ऐसा काम मत करिए कि 36 टुकड़ों में हमें विभाजित होना पड़े। लव जिहाद जैसी बहुत बुराई हमारे समाज में पैर पसार रही है, तो इसकी तरफ न जाकर आप अपना कैरियर बनाएं। जैसे कि कहा था कि बेटियां शान है, आन है, बान है, तो ऐसी बेटियां बने, देश का नाम तो उज्जवल करेंगी ही, साथ में माता पिता की गर्दन न झुकने दें। कितनी कठिनाइयों से माता पिता आपको भेज रहे हैं। सरकार ने कितनी आपके लिए योजनाएं दी हैं, प्रतिभा वाली योजना, गांव की बेटी योजना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजना, और अब रिसेंटली तो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने लाडली बहन योजना भी कल से स्टार्ट की है। जब वो हमारे प्रति इतने सेंसिटिव है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम समाज में एक अच्छी भागीदारी निभाएं?
मैं आप सभी से उम्मीद करूंगी कि आप लोग अपना, कॉलेज का, शिक्षक का और माता पिता का नाम रोशन करें और मोबाइल का कॉलेज में उतना ही प्रयोग करें जितना कि आवश्यक है। मोबाइल जो है बहुत लंबी बातचीत करने का जरिया नहीं है। मोबाइल है एक सूचना का आदान प्रदान करने का, वो बहुत शॉर्ट में होना चाहिए। आज के मैं इतना ही कहूंगी, अगली बार के लिए मैं कुछ बातें छोड़ के जाती हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरी बात को कितना आत्मसात करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने 3 संदेश बड़े ही अच्छे हमारे महाविद्यालय की छात्राओं को दिए और साथ में हम कोशिश करेंगे कि ये सारी प्रयास रहेंगे कि आपकी बातों का यहाँ पर पूरी तरह से क्रियान्वयन हो और इन बातों का सारा ध्यान रखा जाए। मैडम बड़ी ही सक्रिय रही हैं और बड़ा इनोवेशन और नवाचार में और सामाजिक सेवा में अभूतपूर्व आपका योगदान सदैव बना रहा है और विशेष तौर से इस महाविद्यालय के निरंतर विकास में, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और जिनका काफी अपने समय पे योगदान हमेशा मिलता आया है। अब अवसर है हमारे महाविद्यालय के प्रमुख, हमारी प्राचार्य डॉक्टर श्री द्विवेदी मैडम की। मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर श्री द्विवेदी मैडम 2014 में हमारी नेक परीक्षण जो होता है यूजीसी के द्वारा, उसकी नेक कोऑर्डिनेटर रही। हमारे प्राचार्य डॉक्टर उषा कृष्णन के हम निर्देशन में नेक कोऑर्डिनेटर के रूप में उन्होंने अच्छी ग्रेडिंग इस महाविद्यालय को दिलाने में सहयोग दिया था। और दूसरी बार भी अभी गत वर्ष 2022 में आपके कार्यकाल में ही नेक परीक्षण संभव हो पाया था और वो अच्छे से संपन्न हुआ और आज कॉलेज नेक एक्रेडिटेड है और महाविद्यालय के सुचारू संचालन में आपकी प्रमुख भूमिका है और अच्छा कार्यकाल मैडम का यहाँ माना जा रहा है और अच्छे कार्य हो रहे हैं। मैं श्री द्विवेदी मैडम से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर आए और अतिथियों के सम्मान में और छात्राओं को अपना उद्बोधन दें। सभी को नमस्कार। आदरणीय सत्संग जी, अवधेश यादव जी और हमारे प्राचार्य मैडम, कृष्णन मैडम, वीणा वर्मा जी और जैन साहब, संजीवा जी और अभी हमारे सभागृह में बैठे हुए सभी साथीगण और हमारे बच्चे, सभी लोग बहुत कुछ अच्छा बोल चुके हैं। इतनी अच्छी बात के बाद कुछ कहने का बनता नहीं है, पर आज हम लोग यहाँ जिससे एकत्रित हैं पोस्ट पैंडेमिक या कोविड-19 के इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 के विषय में बातचीत करने के लिए, या जो हमारा आज का विषय है इस कॉन्फ्रेंस का, तो मैंने जो मुझे 2 चीजें एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी पोस्ट कोविड अपने को, वो था एक तो वर्क कल्चर बदला, ऑनलाइन वर्क शुरू हुआ, सब लोग वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर शुरू हुआ, ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हुई, फूड ऑर्डर्स होने लगे। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो मन बड़ा दुखी इस बात का था कि जब फूड ऑर्डर्स होने लगे तो सीधा सीधा ये परिवार नामक संस्था पर प्रहार हो रहा था। यदि ऐसा ही बाहर से खाना आने लगेगा, सब कुछ बाहर से होने लगेगा, शॉपिंग ऑनलाइन हो रही, वहां तक भी ठीक था, तो मन दुखी होता था। पर ऐसा कर पा रहे थे, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो ये अनुभव किया कि जो यंग जनरेशन है जो बहुत आईसीटी फ्रेंडली है, कंप्यूटर फ्रेंडली है, टेक्नोलॉजी जिसे आती है, वो लोग ही इन सब कामों को कर पा रहे थे। और एक एल्डरली जनरेशन थी जिसमें मैं अपने आप को भी शामिल करती हूँ, हम लोग इतना आईसीटी फ्रेंडली नहीं थे, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना पसंद करते, हमको लगता बाजार में जाकर ही लिया जाए और उस व्यक्ति से संबंध भी स्थापित होते हैं। ऑनलाइन वाला जो डिलीवरी बॉय आके दे गया तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से आया, किसने दिया। यदि अपन बाजार जाकर लेते, ये मेरा अपना अनुभव है और ऐसा मैं
सोचती हूँ तो उसका अच्छा प्रभाव तो हुआ। दूसरी चीज, उसी समय में एक शब्द चला था सोशल डिस्टेंसिंग। मुझे बार बार इससे आपत्ति होती थी कि नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, नॉट सोशल, क्योंकि सोशल का सोशियोलॉजी में हम लोग कुछ और मीनिंग लगाते हैं। तो सामाजिक दूरी नहीं बनी अपन में, सभी ने एक दूसरे का बहुत सहयोग किया और बहुत अच्छे से उससे निपट कर आए। ये बात अलग है, जैसा कि यादव जी ने कहा, बहुत नुकसान उठाना पड़ा, पर ईश्वर की दया से और चूंकि वैक्सीनेशन हो गया, हम सब आज के समय में सुरक्षित हैं। मैं यहाँ यह भी कहना चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, पर नन ऑफ द टेक्नोलॉजी कैन प्रोड्यूस ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना सकती, और ह्यूमन ब्रेन की जो पावर है, इमेजिनेशन इज द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। कोई टेक्नोलॉजी इमेजिन नहीं कर सकती, इमोशंस या सेंटिमेंट्स को नहीं बना सकती, और ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। भावनाएं, संवेदनाएं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, मूल्य और आदर्श, ये हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो हम टेक्नोलॉजी का उपयोग तो करें, और विद द वैल्यूज हम अपने मूल्यों को सुरक्षित रखें और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ें। लाइफ प्रोड्यूसेस, लाइफ कम्स आउट ऑफ लाइफ। जीवन से ही जीवन बनता है, टेक्नोलॉजी जो है कोई लाइफ नहीं बना सकती। इसलिए जीवन की सुरक्षा की बात करें, जैसा अभी मैडम ने कहा कि 36 टुकड़ों में बात, तो वास्तव में एक बात यह है कि जीवन खत्म कर दिया। तो जीवन जब हम नहीं बना सकते, कोई भी नहीं बना सकता, तो उस जीवन को बचाएं, क्योंकि लाइफ बनाने वाली कोई टेक्नोलॉजी नहीं, इमोशन सेंटिमेंट्स बनाने वाली कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारी सुविधा के लिए है, और ये सेंटिमेंट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंटिमेंट्स का ही परिणाम है रामायण, महाभारत, राजमहल। सेंटिमेंट्स नहीं होते तो ये धरोहर भी हम लोगों के पास नहीं होती। तो बच्चों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मूल्यों को, आदर्शों को और टेक्नोलॉजी का उपयोग रखें, बनाकर समाज का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम ने बहुत अच्छी एक बात बोली, जो की सेंटेंस कहा जा सकता है कि लाइफ कम्स आउट ऑफ लाइफ, जो आज का एक बहुत प्रमुख देखता हूँ कि, लेकिन ये बात है कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस बहुत कमाल कर रही है, एक ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर रही है, एक मानव को रिप्लेस करने में लगी हुई है। ऐसे में आपका ये वाक्य कि लाइफ कम्स आउट ऑफ लाइफ बड़े मायने रखता है। और आजकल जहाँ डिजिटल ह्यूमैनिटीज का युग है, मैं खुद एआई का, कंप्यूटर साइंस का इनमें बड़ा प्रवर्तक और समर्थक हूँ, लेकिन जो दूसरे आजकल तो ये कंप्यूटर साइंस इमोशन सेंटिमेंट सब पैदा करने लग गए हैं, इमोटिकॉन्स भी और सब, लेकिन इस बात का कोई तोड़ नहीं है कि लाइफ कम्स आउट ऑफ लाइफ, और इमोशंस, संवेदनाएं, भावनाएं ये नहीं। और आजकल तो लैंग्वेज लिटरेचर में भी ह्यूमन कंप्यूटर साइंस से हो चुका है, और मिलजुल के काम हाइब्रिड तौर पर हो रहा है। फिर भी जो है, मनुष्य को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ह्यूमन टीचर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, गुरु को कोई जो है प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। आपका उद्बोधन बड़ा, लेकिन इसके पश्चात हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय अतिथिगण, हमारे एक्सपर्ट, इंटरनेशनल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम एक एक मिनट उनसे भी थोड़ी उद्बोधन करना चाहेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं ली थी बाई एंड। आई वुड लाइक टू इनवाइट on this physical platform of those online experts। मैं मंचा से सभी अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि आप सोफा पे अपना प्रथम पंक्ति में स्थान करिए। एक एक मिनट के लिए हम सुनना चाहेंगे। हमारे बीच में I invite Lee Thi Mai On, who is International Ambassador of Namaste India magazine, voiceovers of Arcady and motivational channel Vietnam. From Vietnam, he is joined online with us. And sir, I invite you to speak a few words to this physical meet, a physical gathering.
The second guest with us, the second vice 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 with us. Um, It seems like there is a technological glitch. There is a connectivity issue. Uh, so formally, I write for the voter friends. Dr. Saurabh Jain, the chairman, would like to address the gathering. I invite Dr. Saurabh Jain to speak a few words. Thank you, sir. First of all, I would like to congratulate to organizer Mata Jijaji by Government PG Girls College Indore, Principal Dr. Mrs. Sri Dwivedi Kaddarji, Organizing Secretary, Convener of the conference. This conference based on research after pandemic, based on multidisciplinary criteria. For this conference, we have received near about 50 plus article for the proceeding and for approval of MHRD book chapter. You can have a good look for in souvenir launching for this conference proceeding. Actually, as we know very well, after a pandemic period, every person is suffering from some issues. We having a different task and we having a different opportunities for doing their work. I will appreciate to Mata Jija by Government VG Girls College to organizing such a wonderful international conference on multidisciplinary criteria. So I would like to again say thanks to Principal Kaddar Madam Ji, Chief Managing Director, Research Foundation of India, Dr. Sukumar Gupta Ji, National Coordinator, Dr. Ajay Jain, Dr. Dasmi Agnihotri, President North Board, President RFI, Dr. Manish Dubey, Dr. Sanjay Prasad, Dr. Paru Sarda, and Coordinator Dr. Ashwini Sharma Ji, and Organizing Secretary Dr. Parthos Sharma Ji. So thank you very much. A special thanks to participants to make that international conference success. So thank you very much. Over to you, please. Thank you. Lee Thi Mai On from Vietnam has joined us. I request her to speak a few words. Okay. Can you see me? Yes, welcome, madam.
Yeah, thank you very much. Good afternoon, good morning, good evening to everyone. I'm very happy and honored to be here as an international speaker. First of all, I would like to thank the organizer, and on the speaker, and I would like to say would like to wish all of you here good health and happy new year. Yeah, and now can I share my screen? Why not, please? Thank you. Coming from Vietnam, I'm a teacher. I'm very happy to be here again, right? And I find it's very interesting with the topic, what's the education like with the impact of information technology after the pandemic COVID-19. You can see that on screen is my school in Vietnam, Lao Cai High School number 1. And now I will show you two evidence. The first evidence, you can see the online learning or distance education before and after the pandemic COVID-19. On the screen, we can see many disadvantages of distance education before the pandemic on the people, especially the teacher and student can see that. And the first one, in most cases, students and teachers face a number of common problem differences in availability of communication channel, lack of equipment, and low quality of telecommunication services. Some students who do not have reliable internet access and or technology find it difficult to participate in digital learning. The second, from the onset of the pandemic, teachers were immediately tasked with implementing distance learning modality, often without sufficient guidance, training, and resources. The majority of the teachers lacks real practice and the ability to build online learning, organize, and conduct video conference with students. And the last one, the complexity of organization of work for the development of oral speech skill when teaching a foreign language. Next one. Due to insufficient distance learning experience, a lot of time has to be spent on the technical organization of an online lesson. The volume of the lesson material is less than on the traditional teaching method. There's no guarantees of the student's fulfillment solution of educational tasks. Lack of direct communication with teacher, many students find much more convenient to ask questions right away during the course of the class, which is impossible when studying online. But however, after the pandemic COVID-19, we see many positive of learning online. An individual learning pace is one of the main features. Students can learn at their own pace, revisit video tutorial or presentation, go back or read it, skip or speed up concepts of their choices. The student practice self-study that is vital nowadays in the modern society. Next one, the possibilities of the internet in the selection of bright
colorful demonstration material, the use of video and audio content by the teacher for online classes practically raise the level of skill in the sphere of information technologies. And one more, there's no need for students to spend money on teaching ads on the necessary material for education are available online within the courses. And some more we can see that in case of missing a lesson, you can revise training material later, right? And students can practice self-study. That is vital nowadays in the modern society. Online education help develop motivation and self-discipline. Practically raise the level of skill in okay. And now I will show you one more evidence. It is online competition. And from Lao-Cai High School number 1, where I am teaching, my student, in 2022, they got 1 gold medal firefighting robot house by itself, house in Indonesia. It's product, so why this? A question here: information technologies. How information technology affect education here? Some minutes back, I show you 2 evidence. The first is online learning, and the second is international online competition. My student got a lot of some gold medal, silver medal, and bronze medals. So, how information technology affect education? Clearly, school after COVID-19, we see that from a teaching culture to a learning culture. I mean the teacher as well, also the learners. Traditionally, from kindergarten to year 12, classrooms are run by teachers who deliver lessons that start and end with a bell. They set test what over examination and post grade that might delight, disappoint, or even surprise parents. The response to the coronavirus has demonstrated how technology can help transform how we teach and learn. But the push for the trend started long before the pandemic struck, and it will go on long after threat subsidies. For years, policymakers has been exploring new transformative approaches to K-12 education that go far beyond just online lesson at home. So, what are the many trends? First, rethinking learning is one way of learning. As lockdown is and school tasks reopen in some places across our region, it's as good a time as any task stroke and look at the likely future of education. Children who start school from now on will grow up to be a worker, leader, digital first world, thus demanding skill and a way of thinking. So, to success in life and at work, they will list all the social, emotional, and academic support they can get via rich and flexible learning experiences that will differ vastly from the school life of their parents. In short,
Education is all three are rereading, rewriting, and re-mathematics are being joined by the last four, rethinking. So one more question here. How can we use technology to rethink education? Now we have some solutions that have potential to transform and improve the system so students can achieve more and develop valuable skills with better outcome. The question for us now is, how can we use technology to rethink education? Theory and other experts want a systemic shift in which education will move away from a teaching culture to a learning culture, mean learning lifelong, yes. Real-time data innovation like artificial intelligence and a range of new devices and tools will help transform the role and relationship of student, teacher, and parents. Students will be empowered to learn for themselves in flexible or often collaborative way in both inside and outside classroom at their own pace. They will be able to follow their own interests and be challenged where appropriate. The real learning is that learning can be hard, he said. And we see on the screen, I show you three kind of people in society. Mostly the teacher, the parent, and another classroom. The teacher will have access individualized real-time data and how while it's their student and progressing scholastically and emotionally. They can devise new challenges and offer appropriate support to each try to move ahead. And moreover, what about the parent? They will be better connected to and involved with the children education with certainty, detail, and confidence. They help them a lot. And one more, the classroom we have known is for century. We also reimagine Anthony Sensitor, Vice President of Education at Microsoft, predict that technology will see school morphing into learning hub. So, beyond classroom worm, what happened? Now we can rethink that model. It can be multiple teacher with multiple skills. They can be places where kids can move around more flexibly, and they don't have to do the same thing at the same time in the same way. School has been exploring this for some time. Technology trains the success rate. However, Tina believe bricks and mortars school will play an important role in the future. For example, a school, however, is a safe place for the children to learn social skills while the parents are at work. So that's one trend, but with database technology, educators will also be able to create flexible learning spaces and continuous learning environment, which will spread across the home, the school, and the community as well. So I show you one more people-driven learning is one way of learning for all the learners after COVID-19.
thanks to information technologies. Perhaps technology's most direct impact will be the emergence of personalized learning, where a student enjoy focused individuals' attention from the teacher who will access real-time data on their progress and problems. One more. Theory regards this as a fundamental breakthrough for learning. Knowing what is happening in the life of a student might spell the difference between a toxic part and a prosperous path in the future. With data-rich model, they can help support kids holistically. He also regards it as a fundamental breakthrough for learning. Yes. And we also have technology that can act as role 10 extra teacher. It can give me the ability to observe on-type detail and to understand at a much deeper level what the needs of the kids are, not just in the regard to the content, but also pastoral care and life in general. We mean that technology can recognize pattern and certain conditions that might need intervention. We can become much better at supporting them. Some educators describe that this is data-driven learning, but that is horizontal. It's really people-driven learning. So one more I show you, social and emotional well-being. It is a holistic approach that must do more than only focus on academic progress. It also helps teachers stay on top of and adjust to factors that affect social and emotional well-being. Teachers will be able to ensure students feel inspired, safe values, and able to learn in ways previously not possible. Now, a new learning tool will also be able to adjust to the needs of individual students without intrusion or intervention from teachers. It also would be like one of those vital 10 teachers turning up brightness of skin without bothering to tell the teachers smarter the technology gets, the more the teacher is supported and empowered. So, personalized learning and real-time data could also see an end to the current cycle of lesson and tasks. First, personalized learning and real-time data could see an end to the current lesson test. A test gives the teacher snapshot a time about the whole bunch of kids. One more varies if they are measuring on the time of the real time. We can see where every try is become because अभी लीड थी भाई ने बताया कि हम अपनी जीवन शैली को कैसे उन्नत कर सकते हैं. हाउ कैन टेक्नोलॉजी कैन एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फैसिलिटेट learning with emotions and all that. I invite
Amit Kanodia to tender vote of thanks, and Dr. Ajay Jain. I. नमस्कार, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। मैं आभारी हूँ हमारे वर्ल्ड सेल का, जिन्होंने हमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया और कंडक्टिंग दिस कॉन्फ्रेंस। फिर मैं आभारी हूँ हमारे प्रिंसिपल मैडम का, जिन्होंने हमें यहाँ आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही साथ मैं आभारी हूँ रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिनके कोलैबोरेशन में ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। साथ ही साथ मैं आभारी हूँ हमारे सर डॉक्टर अशोक सर साहब, जिनके सहयोग से यह कॉन्फ्रेंस सुचारू रूप से संपन्न हो पाई। धन्यवाद। कौन बोलेगा? सबको नमस्कार। Sir, I want to present my presentation. Okay, sir. Sir, give me a minute. I will start sharing. Sir, is my screen visible? Yes, sir. So good morning, everyone. I'm Shreyang Bhataya from Christ University. Today, I'm going to tell you about the impact on management after COVID-19. So first of all, let us know what is management. So management is a process of getting the work done or the task done that is required for achieving the goals of an organization in an efficient and effective manner. And process implies the function of the management. This is under management, various things come like planning, organizing, staffing, directing, and controlling. And management, many famous people said that management is the art of knowing what you want to do and then seeing that they do it in the best way and the cheapest. So now let's move to how COVID affect the management. So yes, so the need, why did I choose this topic is that COVID-19 pandemic that engulfed the entire world since the beginning of 2020 forced consumers to learn the new ways of life and unlearn the existing habits with the paradigm
of time flexibility but location rigidity. As consumers adapt to the new normal of life, they embrace new digital technologies to facilitate work, study, and consumption in more convenient manner. And companies that were unable to adjust and adapt to these sudden changes posed by the pandemic perished very soon. And the present paper investigated the impact of the pandemic on the behavior of Indian consumers and their consumption habits. Though there are many studies on pandemics, and their focus is mainly on macro issues of the economy. So here are also some of the newspaper clippings of the during the pandemic. Now I'm going to tell the objective of study, the to study the impact of coronavirus of small industries in India, and to study the impact of COVID-19 pandemic on employment in India. Sorry, the small companies in India, and to suggest the measures to improve the present situation of small companies in India. So let's move up to the first topic. What is the impact of coronavirus on SMEs? So SMEs are found to be more vulnerable for cybercrime and phishing. The MSME sector has been one of the most vulnerable sectors during pandemic because of its size, scale of business, and availability of financial resources. Studies and surveys showed that approximately 95% of firms were impacted negatively due to national lockdown imposed in April 2020. 70% of business remained disrupted till August 2020. And there is also various issues like crush of capital, like SMEs in India are largely unorganized, and most of the transactions carried by them are in cash and not entered properly in accounting books. And in absence of accurate transaction data, their business do not get the mandatory credit score and find it difficult to access business loans for the normal sector. Now, let's move to impact of COVID-19 on employment in India. So, COVID-19 has damaged our economy, both current as well as the future situation regarding jobs. It is also likely to have impact on workers as they have stopped working just to care for themselves or their families. COVID-19 already have shown its impact on export, and as a as all the puts from the various countries are delayed and even not received yet because of temporary factory closures. So here's the information which tells us about the whole economy, Indian economy to be specific. Now, the measures to improve the present situations of a small industry in India. So, budgetary and policy support. The union budget of 2021 and 2022 brought relief to the capital-starved MSMEs, with the government infusing rupees 15,700 crore for the sector. The decision to incentivize the incorporation of one-person companies in the budget will feed the MSME ecosystem. And next is the fiscal policy support from RBI. So the Reserve Bank of India recently issued a notification allowing banks to deduct the amount released to new SMEs borrows from their net demand and their time liabilities. This means that because banks are exempted to maintain cash reserve ratio for the loans disbursed from January 1 to October 31, 2021, the first MSMEs borrowers. And furthermore, RBI has also allowed non-banking financial companies to avail bank funding under targeted long-term repo operations to promote incremental lending and push revival of streams of stress sectors. Under the scheme, NBFCs will be able to provide a credit lifeline to financially drying MSMEs. So, in conclusion, I would just like to say during COVID-19 era, all the SMEs are struggling
and the biggest problem have been declining demand and broken supply chain. Yet there is a hope for challenge and change. After the dust settles, SMEs find it necessary with time to stay competitive, to evolve and alter. Thank you. Yes, sir. Done. Thank you, sir. Yes, sir, I have raised the hand up. I would like to present, sir. Yeah, thank you. Sir, can I leave the meeting? Hello, sir. Can I leave the meeting? Is it visible to everyone, the slides? Yeah, okay. Yeah, good afternoon, everyone. So, my name is Dr. Pooja Vijayan, Assistant Professor. I'm working as Assistant Professor in Faculty of Performing Arts of Parul University. And first of all, I would like to thank Mata Jijabai Girls, Government Girls PG College and Research Foundation of India for giving me this opportunity to present. I'm a dance educator, and that's why I have selected this topic, digital technologies post-pandemic effects on dance education. Uh, so as we all know that pandemic has changed our world drastically. So there are a lot of innovations. There are, I should say, pros and cons, because as a dance educators, most of the dance educators are not accepting technology. Okay, so that is the demerit. That's what I believe in. And education sector was the worst affected, because as an educator, I believe that it is actually affecting our future generations. So whatever education you're imparting, whether it is dance education, music education, school, or whatever subject it is the worst affected. uh, so technology again played a crucial role in bridging the gaps, because it has created innovative opportunities for the schools and all the education industry. It has created a lot of opportunities, so it's a boon, I should say. Next is the next slide is about the dance education, how we used to impart, and how the instructors has transformed themselves into a tech savvy educators, because most of the instructors, I have already written here, they have switched from the offline platform to the online platform, because not only education, educators have to live also for bread and butter. They have to earn as well. So I should say that they are being forced by the pandemic to select the digital world, uh, to move, to keep on running their business. So the best part is that after today pandemic, we can see and realize a lot of innovations, as I've already said. A lot many apps are there to learn dance, music, I should say, even all the subjects of visual and performing arts. So that is again, I should say that India is progressing. It's a developing country, so we are now into the world of digital world and making a lot of innovations. Even I have seen a lot of educators, they are researching, and I should say that they have uh, they have reached from pen to pen drive, the journey from pen to pen drive, because I know a few teachers, those who doesn't even know the spelling of laptop or computer, they have transformed themselves into they have adapted the software tools, and how what are tools will be beneficial for students if they are teaching them, and how they will be learning. They have learned everything, e-content, videos. Um, as previously also speaker ma'am said that videos, they can, the tutorials, they have to create the videos, what all apps are there, everything they have learned. Here I have pasted two photos, that is offline
to online. You can see the teacher is teaching, at the same time the students are learning from computer. So I have just compared it like traveling to a decided place to learn. So students have to travel to the place of a teacher, or either the teacher has to travel to the area of the student. But here in the if you're learning through the internet, you don't have to travel anywhere. You, if you're attending a function or whatever it is, you, if you have a mobile or device, any device, and provided the data is there, you can sit at the particular place and you can attend the class. Even you can conduct the classes. The teacher is busy with some other work, but in between, if she would like to conduct the class, she can conduct the class. Okay, that's a added benefit of online learning. Someone to accompany if we are sending our kids, we can't send them alone, so they have to be with their parents. So parents have to take time to accompany their kid by leaving all the rest of the works. And here in online, if it is 5-year or 7-year-old, kids are becoming more and more creative in using technology than the elder ones. That's what I have seen. So they can manage alone. Next, it is time consuming. When you are traveling, it's time consuming. Here it is time saving. Next is online teaching tools to be used. Here I have put few of the cloud platforms. Now, why I have mentioned this is because most of the parents' concern is about the safety side of an cloud platform or any platform, because a few months when the pandemic was there, Zoom was not considered as one of the good app. But nowadays, most of the people are using Zoom, Google Meet. So cloud platforms I have already mentioned here, Memrose and Jackrabbit Dance. So these all are the apps which actually are training people in motor skills, whether it is physical education, yoga, dance education, music. So they have different software tools to make kids more familiar with the e-content and all, and of course practical software tools as well. And for communication channel online, the benefit of online is like 24/7 support is there. If the Zoom or Google Meet or whatever it is, if it is not working, we will be having always a phone with us. So connecting always through the video call, WhatsApp video call, is again very convenient for us, for all of us. Next, we can send mail. If the student is having any query, he or she can call, mail all the queries. So this process goes on the communication channels. Next is the internet transactions. If the teacher wants the fees from the students, there is always Paytm, Google Pay, and Phone Pay. Next is the benefits of online learning. Educators have transformed this. I have already mentioned that they have transformed themselves into a tech-savvy digital world, and they are now technically well-versed teachers, most of the teachers. So motor skill imparting way has taken a digitally influenced manner to cope up with the new world, to face any challenges. Now, any challenges means we don't know, we can't assume that what next will be coming. Next will be pandemic or some other new a new pandemic, or we don't know, we can't assume, we can't predict. So we have to have a plan B with us always. So I believe that adapting technology in your day-to-day life is a plan B. And we should be researching more and more on all those skill software tools, what all tools can be introduced, what all tools are there to teach children in a better way. Now, passionate people will be able to learn varied dance forms from the comfort of their home. We all know that we all are Indians. So if we want to learn any other dance form like jazz or hip hop or contemporary, so we can always take these lessons through digital platform from the foreign trained teachers. They can't come here, we can't go there. So technology is the, or digital platform is the only medium, only channel from which we can connect to them. We would be able to make our culture and art forms to reach maximum audience and spread awareness of India. So being an Indian classical dancer, I'm teaching a lot of US based students.
Now they are, we all know that foreigners used to take a lot of interest in our Indian culture and Indian tradition. So it's a boon for us. Technology is a boon for us to spread the culture of our country and spread the awareness of the Indian art forms. And thank you. That's it. I would like to thank one more time Mata Jijabai Government Girls PG College and Research Foundation of India for giving me this opportunity. I conclude here. Thank you. Thanks a lot. Sir, can Thank you, sir. I? Yes, sir. Yes, sir. This is Dr. Kiran Tipkar. Can I present without PPT? Thank you so much, sir. Thank you so much. This is Dr. Kiran Tipkar from DAV College, Jalandhar. My subject is Punjabi. This is regional language. And I present my presentation in Hindi language, but I write it in Punjabi language. Actually, my topic is उत्तर कोरोना काल में सूचना टेक्नोलॉजी का क्षेत्रीय भाषाओं पर जो प्रभाव है, उस पे मैंने ये अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोविड-19 ने मनुष्य की जिंदगी को बहुत अधिक लेवल पे प्रभावित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में इस समय अगर हम या इस समय के बाद की बात करें, तो हम देखते हैं कि उस टाइम भी बहुत ज़्यादा प्रभाव और उसके बाद भी हमें बहुत सारे इसके जो प्रभाव हैं, वो देखने को मिल रहे हैं। विद्यार्थी हो या अध्यापक हो, क्लास में वो अपने कमरों से निकल के या क्लासरूम से निकल के ऑनलाइन हो गए थे और हमारी जो एजुकेशन थी, चाहे वो स्कूल की थी या कॉलेज की थी, वो सिर्फ हमारे एक बेडरूम तक या हमारे स्टडी रूम तक सीमित होके रह गई थी। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का ज़रिया सूचना टेक्नोलॉजी बनी रही, पर बहुत सारे ऐसी दुश्वारियाँ या मुश्किलें थी जो कोरोना काल में और कोरोना काल के बाद आज भी हम वो फेस कर रहे हैं। अध्यापक और विद्यार्थियों को इसमें ये मुश्किलें सहनी पड़ी थी, खास तौर से जब हम भाषा की बात करते हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भाषा है, तो मेरा ज़्यादा फोकस उसी पे रहेगा। तो भाषा के क्षेत्र में जब हम इसकी बात करते हैं, तो भाषा का विद्यार्थी हो या अध्यापक हो, वो परंपरागत शिक्षा से तकनीक की जो टेक्नोलॉजी की शिक्षा थी, उसमें आके सिमट गया था। और भाषा ऐसा एक सब्जेक्ट होता है जिसमें शायद हम एक दूसरे के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेट जब करते हैं या बात करते हैं, चाहे वो लिटरेचर हो या लैंग्वेज हो, तो मे बी ज़्यादा हम बात कर सकते हैं। और लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसमें है, लेकिन इस लेवल पर नहीं जो और सब्जेक्ट्स में हमें देखने को मिलती हैं। भारत जो कि एक हम उसको ये नहीं बोल सकते कि विकसित हमारा देश है, वो एक विकासशील देश है और टेक्नोलॉजी में आज भी हमें बहुत सारी ऐसी मुश्किलें हैं जिनका सामना करना पड़ता है। खास तौर से जब हम क्षेत्रीय भाषा की बात करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी उलझनें हैं जिनको सुलझाना बहुत ज़रूरी भी है। और शायद जब भाषा का एक अध्यापक या एक विद्यार्थी जब कोरोना काल के दौर में था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शायद मैं खुद पे भी इम्प्लीमेंट जब करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन आज मैं उन चीज़ों में काफ़ी हद तक ट्रेन्ड हो गई हूँ। वो टाइम था 2019 और उसकी बात करें और आज तक 2023 हो गया है। बहुत कुछ आज के समय तक बदल चुका है, जो शायद 2018-17 में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ नहीं करते थे एज़ अ स्टूडेंट और एज़ अ टीचर, लेकिन आज हम कर रहे हैं, जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में इतने बदलाव आए जिन्होंने कुछ अच्छे उसके कुछ पक्ष हमने देखे और कुछ उसके बहुत बुरे पक्ष भी हमारे सामने आए थे। कोविड-19 ने पूरे संसार में एक शिक्षा का एक नज़रिया ही बदल के रख दिया था। मार्च के मध्य में ये जो सारे स्कूल और कॉलेजेस हम देखते हैं, वो बंद हो गए थे ताकि अध्यापक और विद्यार्थियों को इन महामारी से इससे बचाया जा सके। शिक्षा स्कूल और कॉलेज से निकल के घर के इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे टूल्स थे, जहाँ उन तक सिमट के रह गई थी। आज कोरोना काल के बाद सूचना टेक्नोलॉजी ने जीवन और समाज के हर पहलू को अपने एक जैसे हम बोल सकते हैं अपने कलावे में ले लिया है या उसके साथ जुड़ के हम चल रहे हैं। इसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल पर जो है मतलब उभारा है टेक्नोलॉजी ने शिक्षा को। बहुत कुछ इस
क्षेत्र में नया हुआ है, शायद पहले कभी नहीं हुआ था। आज भी हम उन जो टूल्स थे या तरीके थे उनको आज भी लेके चल रहे हैं। बेशक ऑफलाइन क्लासेस हो गई हैं, बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, टीचर या अध्यापक फेस टू फेस हम बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज भी हम उसी तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पर सूचना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब हम क्षेत्रीय भाषाओं की बात करते हैं तो बहुत सारी सहूलतें या फैसिलिटीज जो हैं वो विद्यार्थी और अध्यापक को मुहैया नहीं होती, जो शायद और सब्जेक्ट्स में होती हैं। मेरे पास जो मैंने ये रिसर्च पेपर लिखा है, इस रिसर्च पेपर में मेरे खोज पत्र का जो विषय है वो कोरोना काल, जो उत्तर कोरोना काल, अभी उत्तर कोरोना काल चल रहा है, तो उसमें सूचना टेक्नोलॉजी का रीजनल लैंग्वेज पे क्या प्रभाव पड़ा है उस पे ही मैंने इसको इलेबोरेट किया है। और मेरा ये जो रिसर्च पेपर होगा उसमें ये सारा कुछ मैं मेंशन करूंगी। थैंक यू सो मच जीजाबाई कॉलेज और सारा स्टाफ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं पंजाब से और पंजाबी सब्जेक्ट में ये रिसर्च पेपर लिखूं और आपके सामने प्रेजेंट करूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Hello, myself Dr. Respawning. Now I am ready for presenting paper, sir. Okay, okay, sir. Thank you. Thank you. Hello. Now visible my presentation, sir. Myself, Dr. Respawni, Department of Computer Science, CM Dubey Postgraduate College from Bilaspur, sir. Our topic is analysis, PSO-based fuzzy system and analog-based hybrid software estimation process, sir. Basically, my paper objective is a technique that we refer to as a particle work on data set. That will be grouped by the K clustering algorithm, and this point is providing model with each of the data value. This is the basic idea of the this paper. This one introduction, actually why have to develop this paper is paper. Nowadays, productivity is the most important factor in this business. So productivity, the fund activities are involving planning and scheduling, assessment of requirements, providing distribution of the available resources to meet those requirements. So next one, we do the requirement analysis at any early stage in the software development process has becoming amount as a direct result of the expression in scale and scope of model software program. The amount of time it complete process
Hello, sir. I want to present my paper. It's my turn now. Okay, sir. So can you see my screen now? Uh, Hello, sir. This is Seema Devi, Assistant Professor, Chemistry Department, Guru Nanak Khalsa College, Karnal. My topic is a study of effects on digital learning on teaching and learning. Objective of my presentation of my study is develop the skill and the confidence of educator in an appropriate and effective use of digital technology to support learning or teaching. To understand the historical development of digital technology, improve access to digital technology for all learners, ensure the digital technology to ascend central consideration in all area of curriculum and assessment delivery. To understand the digital education initiative and the digital device. Comparison between the traditional teaching and digital learning. There are various differences in the teaching material contents, learning channels, and practice method between the traditional teaching and digital learning. For instance, the learning contents focusing on the convenience and flexibility were suitable for digital learning, while traditional teaching was better for course where practical operation or teamwork. Although the digital learning could not be completely replace traditional teaching, it could be achieved the best teaching effect and have learners be glad to learn by reinforcing traditional teaching with the digital learning and comprehensive practice both methods in teaching activity. The difference between the digital learning and the traditional teaching is learning environment and the person. Traditional teaching with lecture in classroom was the most traditional and representative teaching method. In short, it referred to the instructor delivering teaching material in the teaching activity to learners through interpretation. With the long history, it has been broadly applied and it is still one of the favorable teaching methods of instructor. The digital technology platforms initiative by the Government of India, National Digital Library, e-Pathshala, UGC MOOC, e-Yatra, spoken to TL portal, National Digital Educational Agriculture, Disha, Swam and Swam Prabha. Advantage of digital learning. Learning is becoming more interesting, effective, and personalized. Improve the quality of education in India from the future point of view. Teachers are also enhancing their modules. It is better than traditional learning. It is cost effective. No geographical boundaries for learning, no time restriction for learning, face-to-face interaction with the teachers and students. And the overall conclusion for my presentation is a study on the effect of computing and emerging technology on teaching learning finds favorable outcome. Apart from teaching, there is a touch of technology in the every aspect of human life today. Today's society is constantly changing. This variability is the law of nature. Due to the change of the flow of this rule, the people have adopted the technology today. Technology has taken place in every corner of the society today. Today, technology is the giving a chance of the backward student to move forward today. The positive steps taken by the government of India have made education system for the student easier.
The study will be very informative for the readers. Analysis of the secondary information will influence the reader's mind toward the technology-based learning. This progress of society is not measure. Proper use of technology symbolize the progress of society. Thank you so much. Sir, can I read my paper? This is Komal Soni from DAV College, Jalandhar, Punjab. Yes, sir, because of some technical glitch and it's raining very heavily today in Punjab, basically Jalandhar. So there was certain error coming to my laptop screen and presentation because of the Wi-Fi connectivity. So I'm just trying to share my paper verbally with you and the topic and the contents which I have taken up. So am I allowed to do this? So the topic of my presentation is for the research paper which I have worked on is the impact of COVID-19 on online shopping behavior of consumers, a study of Punjab. The basic objective which I have covered under this is to study the impact of COVID-19 on the online shopping behavior of the consumers, preferably their preferences while shopping and the consumption, how the consumption pattern changes post-COVID and pre-COVID. The opportunity will never come across that what e-commerce does during the pandemic. The pandemic COVID-19 have brought a paradigm shift in the behavior of the consumers. The buying habits as well as the shopping style has changed. I have undergone the study through a well-structured questionnaire. The sample size which I have taken is 880 consumers from various colleges, or it's a well-structured questionnaire which I had given to the convenience sampling. And the results which I have found out from that, it basically tell me that the number of the online shoppers has increased tremendously. The 24/7 availability and the convenience factor, these are the factors which affect most the demand of the consumers for shopping online and their buying behavior. The technological advancements and the easy access to the internet, it emerged as a boom for the online industry. The innovations and creativity which is demanded again and again by the consumer, as well as being presented by the producers or the sellers at online platform, has also positively impacted the demand of the goods and services, and that has significantly affected the shopping behavior of the consumers in Punjab. And when we study it with the objective of getting the impact of the COVID-19, so I would like to mention that there was through my data which I have covered, from the pre-COVID, there was only 37% of the population is comfortably using the internet and making their purchases online. And now, after COVID and it's a post-COVID, 47.3% users are using internet or while shopping online, they have chosen the products. Before that, the preferences are more, before COVID, the preferences of the consumer while shopping online through internet is making a movie ticket, purchase of the movie ticket, air tickets, some hotel bookings, or certain products. But now the demand has been shifted to more on the health, welfare, and wellness and fitness products. The pharmaceutical industry has seen a boom while the consumer is shopping or making their purchase of the medicines through online. The demand of online education has been increased. One of the biggest example is we are attending all those webinars and these things from since 2020, and it has become the need of the hour that we all get over one platform through these online modes. So all in all, this COVID-19 has given a boom, or there is a paradigm shift in the behavior of the consumer, and that is a positive shift which has been demanded by the consumer, and the statistics and the ratio which has been seen is tremendously increasing. Thank you, sir. That's all with my submission.